गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्टेब्लिश्ड नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क को धीरे धीरे फेजेस में वाइंड डाउन कर दिया जाएगा, जो कि एक कंट्री वाइड नेटवर्क है लगभग 280 यूनिट्स का। तो इंडिया ने ऑलरेडी पोलियो फ्री स्टेटस अचीव कर लिया है 2014 में। तो अब जो है टाइम है कि ग्रेजुअली स्केल डाउन किया जाए नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क को। तो ये प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लेड है इन कोलैबोरेशन विद WHO, और इसको फेज़ आउट करने का जो है वो प्लान कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और फील्ड स्टाफ जो है उन्होंने कहा है कि पोलियो केसेस जो है नेबरिंग कंट्रीज़ में अभी भी आ रहे हैं और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस का भी रिस्क है। तो इसलिए जो है रॉबस्ट डिसीज़ सर्वेलेंस सिस्टम्स को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो नेटवर्क है इसको कोलैबोरेशन विद WHO के साथ लॉन्च किया था 1990s में, ताकि ये डिटेक्ट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके और एलिमिनेट किया जा सके पोलियो को इंडिया से। इसके अंदर 280 सर्वेलेंस यूनिट्स नेशन वाइड बनाए गए, जो बहुत ही क्लोजली वर्क करते हैं एक्चुअली पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स, इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स और ग्लोबल पार्टनर्स के साथ। तो इसने एक वाइटल रोल निभाया इंडिया को पोलियो फ्री स्टेटस दिलवाने में 2014 में। इसमें जो है इसने डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड किया पोलियो वायरस ट्रांसमिशन को रैपिडली, आउटब्रेक्स को प्रिवेंट किया, और इसको जो है इसने जो है सपोर्ट जो सर्वेलेंस है बाकी की वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ में भी एक्सपैंड हो गया ये, ठीक है। इसकी जो सर्वेलेंस है जैसे मीज़ल्स, रूबेला या डिफ्थेरिया, पर्टसिस, ठीक है। तो WHO के रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया में, उन्होंने कहा है कि ये ट्रांजिशन शुरू किया जाएगा जून 2025 से। पहले 280 जो आपकी सर्वेलेंस नेटवर्क्स में जो यूनिट्स हैं 280 से उसको 190 कर दिया जाएगा अगले साल, और फाइनली 2026-27 का जो साल होगा उसके अंदर जो है इसको कम करके 140 कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये रिडक्शन जो है कोइंसाइड करेगी प्रोपोर्शनल कट इन फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। लेकिन WHO और गवर्नमेंट दोनों ने कहा है कि सर्वेलेंस को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। जो ये सर्वेलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम को दे दी जाएगी। लेकिन प्रोमिनेंट वायरोलॉजिस्ट और इम्यूनाइजेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक टू अर्ली डिसीजन है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी केसेस आ रहे हैं वाइल्ड पोलियो वायरस के। इंडिया ने जो है इम्यूनाइजेशन जो है अगेंस्ट टाइप 2 पोलियो वायरस 2016 में ही बंद कर दी है। लेकिन इम्पोर्टेशन जो है वो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस की जो है वो रैपिड कम्युनिटी ट्रांसमिशन उसकी वजह से हो सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि फेज विड्रॉल ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन जो है आफ्टर रिप्लेसिंग इट विद इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन 1 साल जो है वो करना चाहिए ताकि फ्यूचर आउटब्रेक्स ना हो, ठीक है। सर्वेलेंस नेटवर्क जो है अभी थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है। इससे जो है हंड्रेड्स ऑफ लाइवलीहुड्स को जो है वो फ़र्क पड़ेगा। 2014 से ये यूनिट्स जो हैं वो बियॉन्ड पोलियो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मीज़ल्स, रूबेला आउटब्रेक्स में, DPT की वैक्सीनेशन में, फील्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं न्यू वैक्सीन रोल आउट्स की। तो ये ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस को अंडरमाइन कर देगा जो है इम्यूनाइजेशन और डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम्स में चल रही है। WHO ने क्लैरिफाई किया ये ट्रांजिशन एकदम से नहीं होगा, एब्रप्ट नहीं होगा, और इंडिया जो है वो इंश्योर करेगा कि सर्वेलेंस जो है वो इस रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पर भी चलती रहे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंटर्स न्यू रेगुलेशंस ऑन लद्दाख। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने न्यू रेगुलेशंस जो है वो लद्दाख के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें डोमिसाइल बेस्ड जॉब रिजर्वेशन होगी एम्प्लॉयमेंट को सेफगार्ड करने के लिए लोकल्स के लिए। लोकल लैंग्वेजेस को रिकग्निशन मिलेगा ताकि लद्दाख की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जा सके। क्लियर प्रोसीजर्स होंगे सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट के लिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस आए। तो लद्दाख की लैंड, जॉब्स और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लद्दाख पहले JNK के लॉज से गवर्न होता था। 2025 में जो ये रेगुलेशंस आए हैं एक क्लियर डिपार्चर लेकर आ रहे हैं। एक लीगल फ्रेमवर्क जो कि स्पेसिफिकली फॉर लद्दाख है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अब से लद्दाख में होगा। तो डोमिसाइल की डेफिनेशन भी बताई गई है। तो अब डोमिसाइल सर्टिफिकेशन जो है उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स है वो इशू किए जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स तहसीलदार ऑफ कोर्स ये इशू करेंगे सर्टिफिकेट। डिप्टी कमिश्नर जो है वो डेपोरेट अथॉरिटी होंगे।
यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें टोटल रिजर्वेशन को जो 50% से बढ़ाकर 85% का कैप लगाया जा रहा है। इवन ये रिजर्वेशन जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी लाई जाएगी। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती, पुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया जा रहा है और सपोर्ट भी दिया जाएगा शीना, ब्रॉक्सतात, बाल्ती और लद्दाखी को कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए। 1/3 ऑफ सीट जो है वो विमेन के लिए होंगी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स में, जो लेह और कारगिल में है, रोटेशन के थ्रू ऑफ कोर्स। और सिग्निफिकेंस क्या है, सेंटर ने पहली बार जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट किया है स्पेसिफिकली लद्दाख के लिए, और सेंटर ने चूज़ किया है लद्दाख की डिमांड को मानना थ्रू एग्जीक्यूटिव रेगुलेशंस। डोमिसाइल क्राइटेरिया और रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करके गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है जॉब रिजर्वेशन लोकल्स के लिए, जो कि एक कोर डिमांड थी लद्दाखी सिविल सोसाइटी और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स की। ऑफिशियल रिकग्निशन भी दी गई है भूती और पुर्गी को, जो कि कल्चरल आइडेंटिटी को वैलिडेट करे। और ये रेगुलेशंस एक सेंसिटिव और स्ट्रेटजिक रिस्पांस दिखा रही हैं रीजन की एथनिक, कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद ये शिफ्ट जो है वो लद्दाख को अंडर डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल डाल रहा है। रेजिडेंट्स फेयर कर रहे हैं कि लद्दाख की ट्राइबल आइडेंटिटी, फ्रेजाइल इन्वायरमेंट और लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं बाय एक्सटर्नल इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक फोर्सेस। लद्दाखी ग्रुप तो लेकिन कह रहे थे कि 6 शेड्यूल में डालो हमें, जिसमें ट्राइबल मेजॉरिटी रीजन्स जो हैं लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उन्हें मिल सके। लेकिन और ये डिमांड जस्टिफाइड भी थी क्योंकि 90% जो लद्दाख की पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब्स है। अब क्या प्रॉब्लम्स या क्या लिमिटेशंस हैं इन न्यू रेगुलेशंस में? रेगुलेशंस को आर्टिकल 240 में इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल में एम्बेडेड प्रोविजंस नहीं है। 6 शेड्यूल होता अगर तो जो है परमानेंट गारंटीज़ होती, ये कोई परमानेंट गारंटीज़ नहीं है। और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लैंड परचेज में नॉन डोमिसाइल्स के द्वारा। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज़ हैं, कोई उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है। लोकल लैंग्वेजेस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसको कैसे एजुकेशन, गवर्नेंस और जुडिशरी में रोड मैप का क्या होगा यूज़ के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MSC अरीना। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप MSC अरीना जो है वो मेडन कॉल करने वाला है मिजिंजम पोर्ट पर केरला में। पहली बार एरिना सेल करेगा किसी भी साउथ एशियन पोर्ट पर। ये जो है कंटेनर शिप है 2023 में बनाया गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप है। अभी तो ये लाइबेरिया के फ्लैग के अंडर सेल करता है, लेकिन इसको ऑपरेट करते हैं स्विस बेस्ड कंटेनर शिपिंग कंपनी MSC। और ये वेसल लगभग 24,300 स्टैंडर्ड 20 फुट शिपिंग कंटेनर्स जो है वो कैरी कर सकता है। अपनी साइज़ के बियॉन्ड ये एक पायनियर है ग्रीन शिपिंग में भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उम्मीद पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस, सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उम्मीद पोर्टल जो है वो लॉन्च कर रही है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये एक सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अक्रॉस द कंट्री रजिस्टर करने के लिए, ताकि बेटर मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी एनहेंस हो सके। ये पोर्टल जो है वो लॉन्च होगी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वक्फ बिल जो अभी आया था, और ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं उनके द्वारा फैसिलिटेट किया जाएगा रजिस्ट्रेशंस को। अंडर द न्यू प्लान सभी वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो है वो रजिस्टर होंगी पोर्टल के अंदर विद इन 6 मंथ्स ऑफ इट्स लॉन्च। फुल डिटेल्स होंगी जैसे मेजरमेंट, जियो टैग लोकेशंस। प्रॉपर्टीज़ जो अंडर विमेंस नेम है वो एलिजिबल नहीं होंगी एज वक्फ प्रॉपर्टीज़, लेकिन विमेन, चिल्ड्रन या पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं अभी भी की बेनिफिशरीज होंगे वक्फ एसेट्स के। लेकिन प्रॉपर्टीज़ जो अनरजिस्टर्ड रहेंगी बियॉन्ड द परमिटेड पीरियड उनको डिस्प्यूटेड कंसिडर किया जाएगा और वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए रेजोल्यूशन पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किए हैं प्रपोजल्स डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर्स बनाने के लिए 291 गैप डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री एज पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। तो ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है
जिसमें कि एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है, एजुकेशन, डी एडिक्शन, रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़। अब इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को एजुकेट करना अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़, रिसर्च फैसिलिटेट करना, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज देना, आइडेंटिफिकेशन, मोटिफिकेशन, काउंसलिंग, डी एडिक्शन, सभी तरह के फॉर्म्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ को एड्रेस करना। अब इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस को या फिर एनजीओज़ को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को। टारगेट पीरियड इसका 2018 से 2025 था। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इकोवास। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स अपनी 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था लागोस ट्रीटी साइन करके 1975 में, लागोस में, नाइजीरिया में। तो कॉपरेशन और इंटीग्रेशन प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से फिर एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया गया वेस्ट अफ्रीका में, ताकि लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों के बढ़ाए जा सकें। एक सिंगल कॉमन करेंसी है, एक सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक है ये, जहाँ पर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशंस, एनर्जी, फाइनेंशियल इश्यूज़, सोशल और कल्चरल मैटर्स को एड्रेस किया जाता है। तो इसके करंट मेंबर स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये पहले एक रीजनल पीस कीपिंग ग्रुप भी जो है चलाते होते थे, जिसको हम इकोमॉग कहते थे, नाइजीरिया द्वारा लेड, लेकिन अब वो नहीं है। और अबूजा में, नाइजीरिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्लीन प्लांट प्रोग्राम ग्रेप्स, ऑरेंजेस, पोमेग्रेनेट्स के लिए महाराष्ट्र से। तो ये एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ डिसीज़ फ्री एंड हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए जो है वो अवेलेबल कराया जाता है, ताकि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस को एनहेंस किया जा सके। तो अब इसके अंदर 3 की कंपोनेंट्स हैं। 9 क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाना, जो ऑफ़र करेंगे डिसीज़ डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट्स, डेवलप करेंगे मदर प्लांट्स फॉर नर्सरीज़। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लार्ज स्केल नर्सरीज़ बनाकर एफिशिएंटली मल्टीप्लाई करना क्लीन प्लांटिंग मटेरियल को। रॉबस्ट रेगुलेटरी और सर्टिफिकेशन प्रोसेस देना, ताकि कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी हो सके प्लांटिंग मटेरियल की। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, थ्रू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। The first topic is National Polio Surveillance Network. This topic is important for your governance section. The government has proposed to wind down, of course, in phases, the World Health Organization established National Polio Surveillance Network, which is currently a countrywide network of over 280 units. India, having achieved the polio-free status in 2014, is now moving to gradually scale down the National Polio Surveillance Network, which is a vast network of field units which played a pivotal role in this milestone. So this program, or this plan led by the Government of India in collaboration with World Health Organization, aims to phase out network and integrate polio surveillance into broader public health surveillance mechanisms. However, public health experts and field staff have raised alarm over the decision, citing continuing polio cases in neighboring countries, risk of vaccine-derived poliovirus transmission, and the importance of maintaining robust disease surveillance systems. So this National Polio Surveillance Network was established in collaboration with WHO, and it began functioning in the late 1990s to detect, monitor, and eliminate polio from India. It includes over 280 surveillance units nationwide and works closely with public health departments, immunization campaigns, and global partners. It played a pivotal role in India being declared polio-free in 2014. It also detected and responded to poliovirus transmissions rapidly. After, of course, achieving the polio-free status, it was expanded to support surveillance for other vaccine-preventable diseases like measles, rubella, and DPT. According to a communication from WHO, this network will begin its transition from June 2025. Slowly, the units will be reduced, but this reduction will also coincide with a proportional cut in financial support. But it has been confirmed by both WHO and the government that surveillance will not be compromised. Instead, it will be shifted to integrated disease surveillance program,
Prominent virologists and immunization experts have warned against such a move, saying that this decision is too early, considering that we are witnessing Afghanistan and Pakistan continuing to report the cases of wild polio virus. Since India has stopped immunization against type 2 polio virus in 2016, an importation of vaccine derived polio virus could lead to rapid community transmission. Experts have recommended a phased withdrawal of oral polio vaccine after replacing it with injectable polio vaccine for a year to prevent future outbreaks. The surveillance network employs thousands of health workers also, so therefore it could impact hundreds of livelihoods. These units have also expanded just beyond polio. Now they are monitoring measles and rubella outbreaks and even supporting the DPT vaccination campaigns. So this could undermine years of progress in broader immunization and disease surveillance programs. WHO has clarified that transition will not be abrupt, and it has the stakeholders have said that India must ensure that no gaps emerge in surveillance during this restructuring. So the next topic is Centre's new regulations on Ladakh. This topic is important for your governance section. Center has introduced new regulations for Ladakh. So with the key measures would be a domicile-based job reservation to safeguard employment opportunities for locals, recognition of local languages to preserve Ladakh's cultural identity, clear procedures for civil service recruitment, ensuring transparency and fairness. Earlier, Ladakh was governed by adapted J&K laws, but 2025 regulations mark a clear departure, creating a legal framework tailored specifically for Ladakh. So, domicile based government job reservation will be there. So, domicile requirement will be, of course, there for government jobs in Ladakh. The domicile certificates will be applied and issued uh, by Tehsildar, and of course, Deputy Commissioner will be the appellate authority. Union Territory of Ladakh Reservation Regulation has also been introduced, so as to introduce total reservation, which will has been capped at 85%. Reservation benefits will be extended to professional institutions as well. English, Hindi, Urdu, Bhoti, and Purgi will be declared as official languages, and there will be support for Sheena, Broxtat, Balti, and Ladakhi for cultural preservation as well. One third of seats will be reserved for women in Leh and Kargil Health Development Councils through rotation. These regulations represent the centre's first comprehensive legal and administrative effort specifically designed for Ladakh since its separation from Jammu and Kashmir in 2019. So instead of granting sixth schedule status, which offers constitutional autonomy, the centre has chosen to address Ladakh's demand through executive regulations. By defining the domicile criteria and regulating recruitment, the government has institutionalized job reservation for locals, fulfilling a core demand for Ladakhi society and protest movements. Official recognition will be given to Bhoti and Purgi, validates the cultural identity of large population groups. These regulations also reflect a sensitive and strategic response to the region's ethnic, cultural, and political aspirations. So, after the abrogation of Article 370, the Ladakh area was put under direct central control. Uh, Residents were fearing that Ladakh's tribal identity, fragile environment, and limited resources could be exploited by external economic and demographic forces. So they were strongly demanding the inclusion in the sixth schedule of the constitution, which grants tribal majority regions legislative and financial autonomy. This demand is justified by the fact that over 90% of Ladakh's population belongs to scheduled tribes. But what are the limitations? Regulations have been issued under Article 240, which means that they are just executive decisions and not constitutional provisions. Unlike the sixth schedule, they do not guarantee permanence. There are no restrictions on land purchase by non domiciles. Ladakh Autonomous Hill Development Councils still remain the administrative entities, so they lack legislative powers. Though local languages are officially recognized, there is no roadmap for their use in education, governance, or the judiciary. So the next topic is MSC Arena. This topic is important for your economy section. So the world's largest container ship, MSC Arena, is set to make its maiden call at the Vizhinjam port, Kerala.
This is the first time MSC Arena is sailing into the coast of a South Asian port. So this is a container ship built in 2023 and it is currently sailing under the flag of Liberia. It is the world's largest container ship. It is operated by the Swiss-based container shipping giant MSC. It could carry more than 24,300 standard 20-foot shipping containers slacked up to 22 decks. Beyond its size, MSC Arena is a pioneer in green shipping. Okay, so the next topic is Ummeed portal. This topic is important for your governance and social issues. Central government has will be launching the Ummeed portal for registration of Waqf properties. So this will be a centralized digital platform to register Waqf properties across the country. The aim is to promote better management and enhance transparency. This portal is being launched against the backdrop of the recently enacted Waqf Bill 2025. The registrations will be facilitated by respective state Waqf boards. Under the new plan, all Waqf properties must be registered on the portal within 6 months of its launch, and each registration must include full details like measurements and geotagged locations. Properties which are registered under women's name will not be eligible to be classified as Waqf properties. However, women, children, and people from economically weaker sections will continue to be key beneficiaries of Waqf assets. Properties which remain unregistered beyond the permitted period will be considered disputed and they will be referred to the Waqf Tribunal for resolution. So the next topic is National Action Plan for Drug Demand Reduction. This topic is important for your social issues and also your governance section. Union government has invited proposals to set up district de-addiction centers in 291 gap districts across 30 states and union territories in the country as part of the National Action Plan for Drug Demand Reduction. So this National Action Plan for Drug Demand Reduction is a centrally sponsored scheme which is basically a multi-pronged strategy of education, de-addiction, and rehabilitation of affected individuals and families. The aim is to create awareness and educate people on the ill effects of drug abuse, facilitate research, training, documentation, innovation, and information collection. It also aims to provide community-based services for identification, motivation, counseling, de-addiction, aftercare, and rehabilitation for whole person recovery. It also addresses all forms of drug abuse. Under this scheme, financial assistance is provided to state governments or union territory administrations for preventive education and awareness generation. NGOs and voluntary organizations are also supported financially for running and maintaining the rehabilitation centers. Okay. So the next topic is ECOWAS. This topic is important for your international relations. So recently, the Economic Community of West African States has celebrated its 50th anniversary. So it is the regional group established by signing the Lagos Treaty in 1975 in Lagos, Nigeria. The objective is to promote cooperation and integration, leading to the establishment of an economic union in West Africa in order to raise the living standards of its people. It will have a single common currency and create a single large trading bloc in areas of industry, transport, telecommunications, energy, financial issues, social and cultural matters. The current members of ECOWAS are Benin, Cabo Verde, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, and Togo. And ECOWAS also operated a regional peacekeeping operation known as ECOMOG, which was led by Nigeria in the 1990s and early 2000s, and its headquarters is located in Abuja, that is in Nigeria. The next topic is Clean Plant Program. This topic is important for your environment section. Recently, the Union government has launched the Clean Plant Program for grapes, oranges, and pomegranates from Maharashtra. This is an initiative by Indian government to boost the availability of disease-free and high-quality planting material for horticultural crops like fruits, vegetables, and flowers. Its focus is to enhance the productivity and quality of horticultural produce by ensuring that farmers have access to certified disease-free planting material, which can significantly reduce crop losses and improve yields. The program consists of 3 key components, and the first is, of course, the establishment of 9 clean plant centers. These centers will offer disease diagnostics and treatments, develop mother plants for nurseries,
Then there is infrastructure development, which includes setting up of large-scale nurseries to efficiently multiply clean planting material. Then we have regulatory and certification framework, which is a robust regulatory and certification process created to ensure complete accountability and traceability in the production and distribution of planting material. It is being implemented by the Ministry of Agriculture through the National Horticulture Board and the Indian Council of Agriculture Research. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.